हेलो जी, आज मैं बनाने वाली हाँ मेरी मम्मी दी वेरी फेमस ग्रीन पेपर कैप्सिकम शिमला मिर्च दी सब्ज़ी। मैनू ये वेरी मच पसंद है। हमारे घर में ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। टेक ऑलिव ऑयल, कट योर कैप्सिकम्स इनटू वेरी बारीक पीसेस एंड देन सुट दो इनटू हॉट तड़कता भड़कता ऑयल। ਇਹ ਜਿਹੜੀ कैप्सिकम बनाने ਦੀ महक आती है ਇਹ ਮੈਨੂੰ बहुत पसंद है। It smells so good. It smells like jalapeno and cheese and something. Then mix it all together. Then start cutting your tomatoes. Now use a chopper because you just need like a puree form of tomato. Okay, I'm using this Hamilton chopper. It does a great job at chopping, making it literally into a literally okay ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਚੀ ਪਿਚੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਲਿਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। the capsicum was done and then I just took some garlic ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਚੂ ਪੁਚੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ unsalted dry roasted peanuts ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਚੂ ਪੁਚੂ ਕਰ ਦੋ। you need roasted peanuts. if you don't have roasted, just roast it. Here are all the ingredients and everything that got ready, including mahi. Mahi ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ bell pepper, capsicum, shimla mirch ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। Now this recipe is very basic. You only need mustard seeds and garlic. So ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੋ। Try to keep your flame on medium high so that it doesn't burn, and then put your peanuts, like the kuchu puchued peanuts, into it, and then put your tomato puree as well. Now for all the spices, I'm telling you this is a very basic recipe. You only need salt, red chili powder and haldi. That's all. मेरी मम्मी की जो रेसिपीज है ना उसमें सबसे बेसिक मसाले होते हैं, लाइक जो बेस्ट रेसिपीज हैं। एंड शी यूजुअली नोज कि किस में जिंजर गार्लिक दोनों अच्छा लगेगा, किस में सिर्फ जिंजर। जैसे उनकी आलू गोभी की सब्जी में सिर्फ जिंजर डलता है, इस वाली में सिर्फ गार्लिक डलता है, और कुछ है जिनमें लाइक चिकन की करी में दोनों डलता है और जिंजर गार्लिक बोथ। अपनी प्यारी जी मम्मी दी तारीफ करके मैं लग गई सिलांट्रो ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਂਟਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, but I got to know that coriander is actually coriander seeds. Whatever it is, I hate dealing with it. And then put your fried capsicum into the pan. Add some water, let it come to a simmer, and that's it. It's almost ready. It smells like home, smells like my mom's kitchen. What am I doing here? Wait, I need to... Oh, I'm cleaning. Clean as you go. My camera angles are so bad because I forgot my tripod at a client's place. And I love my hair today for some reason. It was my hair wash day and I love it. I think I'm singing a song and not allowed to. ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਓ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉज ਰੈਸਿਪੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਡਿਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਜਸਟ ਗੈਟ ਦਿਸ whipping cream. If you're in India, just use the whipping cream. Just use the cream जो मलाई आती है over the milk. Add some sugar. I add very little sugar. If you have Nutella, add Nutella or Nutella or like whatever, any syrup. Just whisk it. I got this whisker from Temu and it has been working really well. You just need to charge it sometimes, but I guess I charged this like months ago. And just keep whipping until like the consistency is almost like this. The consistency need to be almost like ice cream, butter or a Greek yogurt. मैं अपने घर ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ हाथ यूज़ कर ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ कदे। ਇਹ स्ट्रॉबेरी किन्नी बड़ी जी है।
India we used to get like really tiny strawberries. I'm just checking the ingredients, you know, sometimes they write like it's sweetened or something like that because you can't trust ingredients in the US. So yes, you have to check ingredients for fruits as well. In India we get strawberries of this size, and here any bड़ी strawberries, oh my god. ਹੁਣ मैं ਕੀ करना, मैं ਇਹ strawberries ਦਾ ਵੀ ਕੁਚੂ ਪੁਚੂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, okay? Mix it all together and that's it. Your dessert is ready. मेरा पति लुधियाने ਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਪਸੰਦ ਹੈ, like on everything. He likes just loves putting ਘਿਓ on my dishes. So yummy. Taste test. Let's see. I know it tastes good. I know it tastes good. Yes. Like, share, subscribe.